Hello everyone, welcome to the political science tutorial. This is the one place to learn everything about political science. This channel will help you all with all the concepts of political science as well as theories in both English and Hindi. So spread a word regarding this channel. Hello and welcome to the second part of the ground rule. In our first part, we actually spoke about the Government of India Act of 1858, and the link to this tutorial you will find in the description box below as well as on I button on top. In today's tutorial we shall talk about the Indian Council of Act of 1861, and before we actually speak about what this Indian Council of Act of 1861 is all about, we just have to remember that after the Great Revolt of 1857, the British government finally felt the necessity of seeking the cooperation of Indians in administration of their country, and in pursuance of this policy of association, British government introduced 3 acts, and these 3 acts were enacted by the British Parliament in 1861, 1892 and 1909. And all these acts are actually called as the Indian Council Act of respective years. So thus the Indian Council Act of 1861 is an important landmark in the constitutional and political history of India. ये जो कानून बना, ये जो एक्ट बना in 1861, इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1861 नाम से जाना जाता है। अभी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत ब्रिटिश सरकार को क्यों पड़ी? इसका कारण यही है कि आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश सरकार को महसूस हुआ कि अगर उन्हें भारत को कंट्रोल करना है, भारत को गवर्न करना है, तो उन्हें इंडियंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी टू एडमिनिस्टर सच अ बिग कंट्री। और इसी वजह के कारण आगे ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, और इस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन को कंटिन्यू करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 ऐसे एक्ट को इंट्रोड्यूस किया, और ये एक्ट थे इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट्स, और ये इंट्रोड्यूस किया पहले इन 1861, बाद में इन 1892 और अंत में 1909 में। तो हम आगे इन्हीं एक्ट के ऊपर अपना फोकस रखेंगे और समझेंगे कि अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट हाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट कैरीड द फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। सो लेट अस बिगिन विद फर्स्ट एक्ट, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861। और हमें ये भी समझना है कि आगे चलते हुए ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट इंट्रोड्यूस किए गए, ये बहुत इम्पोर्टेंट साबित रहे भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया को समझने के लिए और इवॉल्व होने के लिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1861, एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स of the Act of 1861. The first very important feature which British introduced in India is that it introduced representative institutions by associating Indians with the law-making process, and it thus provided that the Viceroy should nominate some Indians as non-official members of his expanded council. And in 1862, finally, Lord Canning nominated 3 Indians to his legislative council, and these were first Raja of Benares, second the Maharaja of Patiala, and third Sir Dinkar Rao. So through this act, the first thing which British introduced, or rather they started, is introducing something called representative institutions, and these representative institutions were basically talking about introducing and associating with Indians so that Indians get a time, Indians get a chance
to be the member of these associations, to be the member of this council in fact, and to enable them to play an important role when it comes to making the law or when it comes to lawmaking process. And in order to do so, the Viceroy, the Lord Canning, finally has to nominate some Indians as a non-official members of this council. Now there were two kinds of official. One were official members of the council who were basically Britishers, and obviously they will have all the powers. And there was a second category called non-official members, and these non-official members were basically nominated members by the Viceroy just to enable the Indian participation in governing and administrating their own country. And therefore in 1862 finally Lord Canning nominated 3 individuals from India, and they were Raja of Benares, the Maharaja of Patiala, and Sir Dinkar Rao. And this is how the first feature is been panned out when it comes to अंडरस्टैंडिंग द एक्ट ऑफ 1861. अभी इस एक्ट के अनुसार 1861 के एक्ट के अनुसार जो पहला फीचर था कि इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने एक रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, और इस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस में इंडियंस को पहली बार एक नॉमिनेशन दिया गया, और इंडियंस इस काउंसिल के भी पार्टनर रहेंगे या पार्ट रहेंगे. भले उनको ज़्यादा पावर नहीं थी, उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर का दर्जा दिया, और जो ऑफिशियल मेंबर थे वो इन शॉर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के आदमी थे. और इस एक्ट के चलते हुए जो वाइसरॉय थे लॉर्ड कनिंग, उनको 3 मेंबर को चूज़ करने का अधिकार दिया, और ये तीनों मेंबर इस काउंसिल के पार्टनर रहेंगे, और ये ब्रिटिश सरकार को हेल्प करेंगे इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया. और इसी के चलते हुए आगे 1862 में लॉर्ड कनिंग ने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया इस काउंसिल के लिए, और ये जो मेंबर थे वो थे राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव. सो ऐसे पहला काउंसिल बना जिसमें एक तरफ ब्रिटिश सरकार थी, और उसी काउंसिल में भारत के 3 लोग भी उनके मेंबर थे. सो दिस इज़ द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर अंडर द इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861. Okay, so the next very important feature of this act is that it initiated the process of decentralization by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidencies. It thus reversed the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773. And with this act, they came up with a new feature that they would support the process of decentralization, basically by restoring all the legislative powers of Bombay as well as Madras Presidency, which was taken away from there way back with the Regulating Act of 1773. और इसी के आगे चलते हुए ये जो दूसरा फीचर बना इस एक्ट का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एक्ट में उन्होंने एक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया, और इस डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस के अनुसार बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को अपने लेजिस्लेटिव पावर फिर से बहाल कर दिए, फिर से उनको वापस दे दिए जो उनसे लिए थे वे बैक in 1773 when the Regulating Act of 1773 was introduced. So this was the second very important feature of this act, that the British government through the Indian Council of Act of 1861 they introduced the process of decentralization by restoring all the legislative powers back to Bombay as well as Madras presidencies. Moving on to the third very important feature of this act, that it also provided for the establishment of a new legislative council for Bengal, northwestern frontier provinces,
and Punjab, which were established respectively in 1862, 1866 and 1897 respectively. So with these feature or with this act, another very important development which happened in India, or rather which provided, was establishment of a new legislative councils for Bengal, northwestern frontier provinces as well as Punjab, and Bengal, northwestern frontier provinces as well as Punjab got their own legislative council with their own powers. And this is another very important way to show that British government introduced a decentralization in order to connect to rest of the India, and also in order to involve Indians when it comes to administration of India. And therefore these new legislative councils were established respectively in all these provinces. Example, Bengal got it in 1962, northwestern frontier provinces got it in 1866, and Punjab legislative council came in existence in 1897. आगे चलते हुए हमें ये भी पता लगता है कि ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के अनुसार नए लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी तैयार किया, और ये जो नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बने वो बने बंगाल में पहली बार इन 1962 में, इन 1866 में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में बने, और पंजाब में 1897 में बने। और इसके चलते ब्रिटिश सरकार ने एक डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया, एक नई व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश की, और इस कोशिश में वो बहुत हद तक सक्सेसफुल भी रहे, क्योंकि इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार का जो होल्ड था वो अभी पूरे इंडिया में स्प्रेड होने लगा था। पहले फर्स्ट इनिशियली दे ओनली हैड इट इन 3 मेजर प्रोविडेंसेस, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल। नाउ दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू एंटायर इंडिया, और इसी के चलते हुए इस काउंसिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद बहुत से इंडियंस को भी इस काउंसिल में कुछ अपना रोल प्ले करने का मौका मिला। ये हमें अब आगे जाके ही पता लगेगा कि हाउ फार द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स played an important role. But as of now, this is the most important development which British introduced under the Act of 1861. Then we have the fourth very important feature of this act is that it empowered the Viceroy to make rules and orders for the more convenient transaction of businesses in the council. It also introduced portfolio system. Under this, a member of Viceroy Council was made in charge of department of the government and was also authorized to issue final orders on behalf of the council. Well, now the fourth very important point or the feature of this act is that it empowered the Viceroy to make rules and orders. Basically, it gave more powers to the Viceroy of India, and today with this feature, with this act, Viceroy can make any rules, can implement any orders, and basically these rules and orders were for more convenient transaction to carry out the business of the council. Now with this act, they for the first time recognize the system called portfolio system, which even today we have in our democracy. We have various portfolios wherein a member of parliament is heading that portfolio, or basically that ministry. So basically the portfolios were introduced way back under this act of 1861, and under this act a member of the Viceroy Council was made in charge of one or more department. That means the member of the councils were, in short, were like ministers. Like today we have a ministers who are in charge of certain portfolio. Example, defense is a portfolio, finance is a portfolio, which is been led by a lot of MPs over a period of time. So in a way they introduce a democratic process at a different level although, and it also authorized that member to issue final order on behalf of the council.
So this is another new system which British introduced in India way back under the Indian Council of Act 1861. So 1861 के एक्ट के अनुसार जो वाइसरॉय थे उन्हें बहुत पावर दिए गए और ये पावर उनको कानून बनाने के लिए एज वेल एज कोई भी ऑर्डर पास करने के लिए दे दिए। अब इस ऑर्डर के या इस पावर के अनुसार जो आइडिया थी ये बहुत सिंपल थी कि जो बिजनेस ऑफ द काउंसिल था उसको स्मूथ रखने के लिए, उसको कन्वीनियंट रखने के लिए ये सारे पावर वाइसरॉय को दे दिए। इसके अलावा उन्होंने एक नया सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया और ये सिस्टम था पोर्टफोलियो सिस्टम। जैसे आज भी हमारे डेमोक्रेसी में पोर्टफोलियो सिस्टम्स है। पोर्टफोलियो बेसिकली मीन्स मिनिस्ट्री, लाइक डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री या फिर कौन से भी आप मिनिस्ट्री ले लो, वो एक पोर्टफोलियो रहता है और उस पोर्टफोलियो के अनुसार जो भी उसका इंचार्ज रहेगा उसको कुछ पावर दिए जाते हैं so that they can take their own orders, they can issue their own orders on behalf of the government. Similarly, way back in 1861 में ब्रिटिश सरकार ने ये पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया और इस सिस्टम के अंदर जो वाइसरॉय काउंसिल का जो मेंबर था उसको एक या ज़्यादा डिपार्टमेंट दे दिए थे और जब भी उनको वो डिपार्टमेंट मिलते थे तो उनको एक स्पेशल पावर था कि वो अपना खुद की ऑर्डर निकाल सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल। जिस तरह से आज हमारे बहुत से मिनिस्टर्स हैं, सर्टन मिनिस्ट्री टेक सर्टन डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सिमिलरली उस ज़माने में वाइसरॉय काउंसिल का जो मेंबर रहता था उसको ये पोर्टफोलियो दिया जाता था और उस पोर्टफोलियो के अंदर वो कुछ भी ऑर्डर इशू कर सकता था ऑन बिहाफ ऑफ द council. So in a way we can realize that the democratic process was already began with the introduction of this act in India, although it was not to that extent the way today we have in India, but it was just a beginning in order to rule India very systematically. And moving on to the last very important feature of this act, that it empowers the viceroy to issue ordinance without the concurrence of the legislative council during any emergency, and the life of such ordinance was just 6 months. And this is another very important feature of 1861 Indian Council of Act. And why it is very important? Because similarly we also have it today in our free India. With this act, the British basically empowered Viceroy to issue any ordinance without taking Legislative Council's opinion or advice into consideration, and such ordinances were issued only during the emergency time, and the life of such ordinance is 6 months. And exactly today, even in India, government in emergency can introduce any ordinance and the life of that ordinance is only 6 months. That means after 6 months it has to be brought back to the parliament for parliament opinion, and then that ordinance can be turned into a law. But for a time being, if it is an emergency of any kind, government can introduce a ordinance, and that ordinance will last only for 6 months. So similarly, way back in 1861, under this act, British Parliament introduced this another feature under this Indian Council of Act 1861, and here they empowered the Viceroy to pass any ordinance without taking opinion or advices of Legislative Council, and such ordinance will last only for 6 months. अंत में जो बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है इस एक्ट का वो है ऑर्डिनेंस के रिलेटेड टू, और इस एक्ट में वाइसरॉय को बहुत पावर दे दिए कि अगर कुछ इमरजेंसी में वाइसरॉय को कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं, कोई ऑर्डिनेंस या कानून पास करना पड़ेगा, तो वाइसरॉय कर सकते हैं और उसको ऑर्डिनेंस कहा जाएगा, और उस ऑर्डिनेंस में वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल का ओपिनियन को भी खारिज कर सकता है, उनके ओपिनियन के बगैर ये ऑर्डिनेंस को पास कर सकता है उनके
एडवाइस के बगैर एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, और अगर ऐसा ऑर्डिनेंस पास होता है तो उसकी जो लाइफ रहेगी ऑर्डिनेंस की वो सिर्फ 6 महीने रहेगी। दैट मीन्स द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंस इज़ ओनली फॉर 6 मंथ्स। और ऐसी व्यवस्था आज भी हमारे कानून में है, आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और इसीलिए हमने बहुत बार देखे हैं कि गवर्नमेंट हैव कम अप विद सर्टेन ऑर्डिनेंस, और उस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ रहती है वो 6 महीने रहती है, और 6 महीने के बाद वो ऑर्डिनेंस बाद में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना ही पड़ता है। उसके ऊपर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वोटिंग रहती है, और उसके बाद वो ऑर्डिनेंस अगर पास होता है तो कानून भी बन सकता है। और यही है सिस्टम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया वे बैक इन 1861. So this is all about the Indian Council Act of 1861, and I hope you have understood this act in detail. So I will see you soon in next tutorial, and in next tutorial we shall talk about the next very important act, that is Indian Council Act of 1892. Till then, take care.